Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So, in yesterday's session, we saw that there was a good amount of buying in the last trading session, and Nifty has now scaled about 19,600. Nifty has almost closed at 19,632 level, which was up by 61 points. So, during the day, this metals and oil auto were just counters where we saw some good amount of buying, whereas the real estate and the banking stock were still underperforming. So if you look at the chart pattern of the Nifty, it looks like maybe today being a RBI monetary policy. After that, if 19,600 levels are held, then there is a probability that we might see some good upside momentum in the market. The hourly charts do suggest strength in the chart. So I think if post RBI policy, if 19,600 levels are held, and today being a weekly expiry also, so that the expiry can be about 19,600 and maybe close to 19,700 level. When it comes to Bank Nifty is still underperforming. The level of 45,000 is acting as a very strong resistance. So Bank Nifty was down by 83 points in yesterday's session, and then most of the stocks it was like a mixed view on the stock front. So Bank Nifty, and again that 45,000, there's a lot of call writing. So this is going to act as a resistance. And I'll maintain that in the near term, if 44,500 level, which I believe is the immediate support level, if that is broken, then there can be some negative bias in the Bank Nifty. So we'll wait and watch for this levels on the either side. So this is right now it's a 500 points range for the today's trading session. Below 44,500, there will be a weakness. Above 45,000, yeah, maybe 100 point plus 45,100. Once these levels are taken out, then there can be some short covering the Bank Nifty. So bias for the day, specifically for the Nifty, it is bullish, and for the Bank Nifty, we'll maintain a slight cautious view. Coming to derivatives report, so in Nifty futures, we have seen a short covering in yesterday's session to the tune of 0.18%, which was a decline in OI by 473 contracts. The put call ratio has gained from 0.99 to 1.18, so this is strength. And from the derivatives point of view, 19,500 is acting as a heavy put writing, so that will be a support. And 19,600 is a call writing, so that will be a resistance. Coming to Bank Nifty has seen a long unwinding to the tune of 0.41%, which was a decline in OI by close to 5,500 contracts. The put call ratio has also declined from 0.86 to 0.76. And same thing, the 45,000 is likely to act as a resistance because there is a lot of call writing. And then the lower side, 44,500 put option, so that will be the support. And if you look at the few stocks which were showing strength in yesterday's session was within the auto, M&M was something which is looking good on charts. So we'll keep a watch on M&M. After that, Tata Consumer is also looking good on charts. L&T, ITC has come to the support level of the 50-day moving average. So some trading bounce is expected in the ITC. Within the banking space, IndusInd is one bank which is showing strength. So just in case if the Bank Nifty performs, so IndusInd Bank can be the outperformer. So, and lastly, the FI data. So again, in the index future, they are sold 6,000 contracts. Net, they are short by 18,607 contracts, and this long short ratio stands at 45%. So it's we'll wait for the RBI policy meet, and post that if there is a recovery in the market hold 19,600, then I believe there will be a positive day for the day. So that's a view from the technical point of view. I'll hand over to Archana Madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, teams. A few updates from my side, starting with Tata Power. The company has registered consolidated profit at 972 crore for Q1 FY24, rising 22% over the same quarter last year. This was backed by the healthy operating performance and the exceptional gain. The revenue grew by 5% at 15,200 crores, while the EBITDA rose by 43% to 3,005 crores. On BSE, the company reported consolidated profit at 442 crores for this quarter, rising tenfold over 44 crore in Q1 FY23, which was driven by 5% stake sale in the associate company CDSL, higher improvement in income and the other income. Revenue for the quarter grew by 15% YY to 215 crores. On IRCTC, the company reported a mixed set of numbers.
The profit came in at 231 crore for Q1 FY24, falling 7% compared to same quarter last year. This was impacted by the exceptional loss of 52 crore in the quarter and the lower operating margin. Revenue from the operations jumped by 18% YOY to 1001 crore, while the EBITDA margin came in at 34.2%, almost flattish on QOQ and down by 350 bips on YOY. We have buy rating on the stock with a target price of 740. On Bata, the company reported mixed set of numbers. The revenue came in at 958 crores, flattish on same quarter last year, while EBITDA margin was at 25%, down by almost 100 bips on same quarter last year. The company's net profit was at 1.1 billion or 106 crore, which is down by 10% on Q1 FY23. The call is scheduled tomorrow. We'll interact with the management and post which will come out with a detailed note. Currently, we have buy rating of the stock with a target price of 1768. On About India, the company registered profit of 290 crore for the quarter, rising sharply by 41% on same quarter last year, which was backed by the healthy top line and the operating performance. The revenue from operations for the quarter came in at 1,480 crores, which was growth of 13% on YOY basis. Next on Safari, the revenue jumped by 46% YOY to 426 crore on account of strong improvement in tourism activities. The gross margin increased by 240 bips YOY to 40.8%, which was led by the price hike amidst the stable input cost. The EBITDA jumped by 71% at 71 crores, while the EBITDA margin expanded by 250 bips YOY to 16.7%. We have buy rating of the stock with a target price of 4089. And lastly, on PI Industries, the company's revenue jumped by 24% at 1,910 crores on YOY basis, while EBITDA was up by 35% on YOY at 467 crores. Margins were up by almost 200 bips at 24.4%, while net profit was up 46% on same quarter last year at 382 crores. So that's it from my side. Now hand it over to Shantanu for further research updates. Thank you and over to you, Shantanu. Yeah, thank you, ma'am, and good morning, everyone. We'll start with some further updates. First of which is about Suzlon Energy, where the company has approved a floor price at rupees 18.44 per share for its 2,000 crores QIP, which is overall a positive update for the company. Next update is on GMR Airports, where the company said that its board will consider raising funds of up to rupees 5,000 crores during the meeting that is on 14th of August. So again, a positive update for GMR. Speaking about Eicher Motors, the company and Amazon are supposed to collaborate to scale electric truck development, and Amazon commits to acquire 1,000 electric trucks from Eicher Motors. So it should certainly be a positive update for Eicher Motors. Next update is on MAS Financial, where Mr. Basant Maheshwari Wealth Advisors LLP has bought 2.93 lakh equity shares of the company, which is a positive update for MAS Financial. Next is on Hero MotoCorp, where company facing the tax probe over links to vendors $11 million false expenditure. Final update is on Axis Bank, where the bank is supposed to infuse rupees 1,612 crores in Max Life through preferential allot. So this was all from my end. Now I'll hand it over to Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. Tata Power came with the results. Their revenue was higher by 5% at 15,213 crores. Very important is their order book in EPC, which is at 17,643 crores. And now Tata Power is building few plants. One is 4 gigawatt module facility that will start production next quarter, September 2023, in next 2 to 3 months. And whereas the other project, which is 4 gigawatt cell facility production, that will start next year, Q4 FY24 in maybe 7-8 months. So this is going to be positive. Now that will reduce their cost, improve their margins. And if we see in solar EPC and their rooftop,
hardly they make any margin now. It is to be in business. But if these modules business come on stream, then their margins will start to improve. Now they are importing, assembling and selling in the Indian market. Later, they will be manufacturing in India, which will reduce the cost. Kalyan Jewellers came with the results. Fantastic results. Revenue was higher by 31% at 4,376 crores. Profit after tax higher by 33% at 144 crores. The company has opened 200 showrooms till now. Bharat Forge came with the results. So revenue was higher by 36% at 3,877 crores. EBITDA margin 15.9%. Profit after tax was 223 crores. And management commentary has been very positive. So they were very positive on their defense deal, aerospace, and multiple applications which they are doing it. So this is something very positive for Bharat Foods. And the way the management talked on the con call, I think the stock can give another 10 to 15% returns very soon. Eicher Motor has won an order to supply 1,000 electric trucks to Amazon over next 5 years period. So it will be in a phased thing, but that is very positive for Eicher. Berger Paint results came very positive. No, I am talking only positive results. Negative results I have not touched anything. So revenue was higher by 9.8% at 3,029 crores in Berger Paint. EBITDA margin was higher by 18.4%. Profit after tax was higher by 39.9%. As raw material cost has come down, the profit after tax was 354 crores. The paint stocks have been correcting due to excess competition, but there can be a relief rally. So Berger Paint is something to look out. So Berger Paint, Bharat Forge, PA Industry, they have given a very good results. So PA Industries, in spite of agrochemical not doing good, now their revenue was higher by 23.8% at 1,910 crores. EBITDA margin 24.5%. Profit after tax 382.9 crores, which is higher by 46%. So there is a margin expansion also in PI Industries. SJVN, very bad results. Their revenue was down 32.8% at 674 crores. But for hydroelectric power, the EBITDA margin is upward of 60%. So the EBITDA margin came at 74.5%. So profit after tax was down 55% at 271 crores. But still, we like power stock. Let it be Tata Power. We like NHPC, NTPC to an extent, JSW Energy. I think, we have not talked about JSW Energy. They are transforming into green energy. So that is very positive for JSW Energy. Uno Mindo came with results. Their revenue was higher by 21% at 3,092 crores. EBITDA margin at 10.7%. Profit after tax higher by 24.4% at 172 crores. Pharma, again, one more pharma company with fantastic results. So 28.9% revenue growth at 1,140 crores. EBITDA margin at 46.3%. Profit after tax higher by 31.2% at 420 crores. EPS 23 rupees. So Natco Pharma is something which can give you 15 to 20% return in next 6 months. Trend came with the results, but Trend results are already in the prices. Revenue was higher by 45.8% at 2,628 crores. EBITDA margin 14%. And profit after tax higher by 46% at 166 crores. Lumex came with the results.
So, Rumax result was better than expected, 21% revenue growth at 18 crores, EBITDA margin at 8.7%, profit after tax 17% higher, at 23 crores. EPS for the quarter was 24 rupees 73 paisa. LED business has started to improve. The LED business has 35% contribution, whereas conventional lighting has 65% contribution. Passenger vehicle again 65%, two-wheeler 29%. So, commercial vehicle at 6%. So their greenfield project at Pune is as per schedule, and commercial production expected in the next quarter. So once that comes on stream, that will boost their revenue. FDZ, one more pharma company, good results. Revenue was higher by 8.4% at 536 crore. EBITDA margin 22.7 versus 15.8. So every pharma company margins have improved. So here also we are seeing that, and profit after tax jumps by 55% at 110 crores. So export formulation API business segment grew at 19%, and with margin expansion helping the company. So last, the result of JP Chemical, revenue was higher by 14% at 896 crores, EBITDA margin 27.1%, and profit after tax higher by 35% at 142 crores. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक और को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. टाटा पावर्स के नंबर्स आए थे. रेवेन्यू जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया 5230 करोड़ का. उसके अलावा कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 70,643 करोड़ के आसपास है. और कंपनी अभी फ्यू प्लांट्स है वो बिल्ड करने वाली है. तो उसमें एक फर्स्ट प्लांट है 4 मेगावाट का जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होगा. नेक्स्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 में नेक्स्ट ईयर में 4 गीगावाट का प्लांट उनका काम चल रहा है. ओवरऑल इससे क्या होगा ना कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी और जो मार्जिन है इम्प्रूव होंगे. तो टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से भी. देन कल्याण ज्वेलर्स के भी नंबर्स आए थे. नंबर्स काफी अच्छे आए थे. रेवेन्यू 31% से हायर आया है और कंपनी ने रिपोर्ट किया 4,376 करोड़ का. और जो पैट है वो 33% से हायर है 144 करोड़. और कंपनी ने अभी तक 200 शोरूम्स ओपन किए हैं. नंबर्स काफी अच्छा है. देन नेक्स्ट अपडेट है भारत फोर्ज. भारत फोर्ज के भी नंबर्स आए थे. उस ओवरऑल देखिए तो मैनेजमेंट टॉक के अनुसार यहाँ से भी स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल है 10 to 15% का. आइशर मोटर जो कंपनी है उनको ऑर्डर मिला है जो 1000 ट्रक से वो अमेजोन को सप्लाई करेंगे नेक्स्ट 5 years के लिए. तो एक पॉजिटिव अपडेट है. बर्जर पेंट के भी नंबर्स आए थे. नंबर्स में रेवेन्यू जो कंपनी ने रिपोर्ट किया 9.8% से हायर है 3029 करोड़. EBITDA मार्जिन भी 18.4% से हायर है. पैट 39.9% से हायर है. ओवरऑल हम लोग देखें तो रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट जो वो नीचे आ गई थी. तो ये नंबर्स काफी अच्छे रहते बर्जर पेंट के. पेंट सेगमेंट में हम लोग देखें तो इतनी हम लोग रैली और मोमेंटम नहीं देख रहे क्योंकि जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ गई उसके कारण. बट अभी एक रिलीफ हो सकता है कि नंबर्स अच्छा है. उसके अलावा पीआई इंडस्ट्री के भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे. मतलब उनका जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है. तो भी कंपनी के रेवेन्यू हायर है. EBITDA मार्जिन 24.5% से हायर है. पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 382.9 करोड़ का 46% से हायर है. देन SGVN के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए थे. कंपनी ने कंपनी का जो रेवेन्यू वो डाउन आया है. कंपनी ने 674 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है. EBITDA मार्जिन 74.5% से हायर है. बट उनका पैट देखा जाए तो 55% से डाउन है. 271 करोड़ रिपोर्ट किया है. तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए थे. हम लोग देखें तो ये सेगमेंट में पावर सेगमेंट में हम लोग को स्टॉक्स अच्छे लगते हैं. उसमें टाटा पावर है, NHPC है, NTPC है, GSW एनर्जी भी एक स्टॉक अच्छा है जो अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू ग्रीन एनर्जी के लिए. तो ये पॉजिटिव है. तो ये स्टॉक आप देख सकते हो. देन फार्मा सेगमेंट में नाटको फार्मा के नंबर्स आए थे. कंपनी के रेवेन्यू जो है कंपनी ने रिपोर्ट की है 1040 करोड़ के अराउंड. EBITDA मार्जिन भी हायर है 46.3% से. पैट जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है 420 करोड़ का 31.2% से हायर है.
नंबर्स काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में 15 to 20% से यहाँ से रैली देख सकते हैं। ट्रेंड के भी नंबर्स आए थे, बट ऑलरेडी प्राइस में जो नंबर्स का जो रिजल्ट अच्छा है तो वो ऑलरेडी प्राइस में है। तो रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया 2628 करोड़ का, एबिटा मार्जिन 14% से हायर है, पैट 46% से हायर है, 166 करोड़ रिपोर्ट किया है। देन मुमैक्स के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू जो है 21% से हायर आया है, एबिटा मार्जिन 8.7% से हायर है। पैट कंपनी ने 23 करोड़ का रिपोर्ट किया है, ईपीएस ये क्वार्टर का है 24.73 रुपीज, और उनका जो एलईडी बिजनेस है वो अभी ओवरऑल परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ है। हम लोग देखें तो ओवरऑल फार्मा जो के जो नंबर्स है तो वो काफी अच्छा है, उनमें जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखी गई है, तो फार्मा स्टॉक को एक बार आप वॉच आउट कर सकते हो। जेबी केमिकल्स के भी नंबर्स आए थे, कंपनी ने रेवेन्यू 896 करोड़ का रिपोर्ट किया है, पैट है 35% से हायर आया है 142 करोड़, इबिटा मार्जिन 27.1% से हायर है। देन बीएससी के भी नंबर्स आए थे, कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है 442.66 करोड़, और इसके अलावा उनका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो हायर है और अदर इनकम भी हायर आया है। रेवेन्यू ये क्वार्टर का ग्रो हुआ है 15.4% ईयर ऑन ईयर, कंपनी ने 215.62 करोड़ रिपोर्ट किया है। आईआरसीटीसी के नंबर्स आए थे, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 231 करोड़ ये क्वार्टर का, और ओवरऑल हम लोग देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 17.5% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस से 1001.8 करोड़ का है। इबिटा मार्जिन 34.2% से हायर है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 740। देन बाटा इंडिया के ऊपर अपडेट है, बाटा इंडिया के जो नंबर्स है तो मिक्स आए थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यह क्वार्टर का 958.15 करोड़ है जो ग्रो हुआ है 1.6%, इबिटा मार्जिन 25% से हायर, नेट प्रॉफिट 1.1 बिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बाय रेटिंग के लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से टारगेट प्राइस है 1768 रुपीज। देन अबाउट इंडिया के भी नंबर्स आए थे, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 290.2 करोड़ का, और ओवरऑल हम लोग देखें तो 41.1% का ईयर ऑन ईयर पे शार्पली राइज देखा गया है। ओवरऑल उनका टॉप लाइन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो था वो हेल्दी था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये क्वार्टर का, वो कंपनी ने रिपोर्ट किया 1479 करोड़ जो इंक्रीज हुआ है 13.4% ऑन ईयर बेसिस पे। देन नेक्स्ट अपडेट है सफारी इंडस्ट्री के ऊपर। सफारी इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू कंपनी का जंप हुआ है 46% से ईयर ऑन ईयर, कंपनी ने 4263 मिलियन रिपोर्ट किया है, और उनका जो स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट है टूरिज्म एक्टिविटी में, ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है 240 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर देखे तो। बेसिकली जो हाइक की थी प्राइस में और उनका जो स्टेबल इनपुट कॉस्ट था उसके कारण ये नंबर्स अच्छे देखे गए हैं। इबिटा जो है 71% से ईयर ऑन ईयर हायर आया है, उनका ओवरऑल देखे तो इबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ 250 बेसिस पॉइंट से, और सफारी है वो वेंचर करने वाला प्रीमियम रेंज उनके ब्रांड के अंडर अर्बन जंगल जो अभी रिसीव कर रहा है स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग इनिशियल रिस्पॉन्स। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 4089। देन पीआई इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू है वो 23.8% से हायर है 1910.40 करोड़ है, इबिटा भी अप है 35.4% से, कंपनी ने रिपोर्ट किया है इबिटा 467.8 करोड़ का, इबिटा मार्जिन 25% के अराउंड हायर है, नेट प्रॉफिट अप है 45.9% से 382.9 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन जीएमआर एयरपोर्ट्स है वो कंपनी के जो बोर्ड है वो रेज करने वाले फंड्स अराउंड 5000 करोड़ जो 14 अगस्त मीटिंग है उसमें। देन आइशो मोटर है उसके ऊपर ऑलरेडी अपडेट दिया है। देन एमएसएल फाइनेंशियल है वो बसंत महेश्वरी है वेल्थ एडवाइजर एलएलपी, उन्होंने बॉट किया 2.93 लाख इक्विटी शेयर्स। हीरो मोटो का कंपनी है वो अभी टैक्स का जो उनका प्रॉब्लम चल रहा है वो फेस कर रही है, ओवरऑल वेंडर्स का $11 मिलियन फॉल्स एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। लास्ट अपडेट एक्सिस बैंक ने इंफ्यूज किया 1612 करोड़ मैक्स लाइफ जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा। So that's it from our end. Thank you again for joining the morning con call. Have a nice day.